पिला माने मो वॉइस क्लियर आछि कि पिला माने कहि दियो। वेरी गुड इवनिंग। मो वॉइस क्लियर आछि? हो ठीक अछि सुन मु तुमको कहूची आग आमर चारोटी प्रोएटी सेक्शन अच्छी गोटे हूँ आमर बालाड ऑफ फादर गिलिगन, साम ऑफ लाइफ, टेलीविजन, मनी मैडनेस। आमर चारोटी 2 मार्क क्वेश्चन पड़िबो तमे जे सेतरु दीटा करिवार अछि। मु तुमको आज सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन एठी लिखि देबी आ ताको बुझेई देबी आ ऑब्जेक्टिव किछटा क्लियर कराई देबी बुझिला जोटा इंपोर्टेंट एग्जाम ऑब्जेक्टिव परीक्षा पय ता सब क्लियर कराई देबी बुझि पाइलो ना एया करबे ना आउ केमती कर परिया देखो मु भाबुची गोटे चैप्टर धर जेतिकी 2 मार्क क्वेश्चन इंपोर्टेंट सब तो पढ़ी हबनी पॉसिबल नो तेनु तुम कोन करियो सिलेक्टेड 2 मार्क क्वेश्चन तुम देई देबी तमे ताको कोन करिवो लेखिकी भलसे बुझेई देबी त कहले बुझि दिबो तापर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन कर देबी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तमे जदि चाहिबो जे कोनोसी गोटे चैप्टर को स्किप कर दबो बुझिला। मु भाबुची एटा बेस्ट उपाय हबो ना कोन कहउछो तम माने। हाँ एमसीक्यू डिस्कशन करिवे। हाँ ठीक अछि मु फर्स्ट क्वेश्चन लिखुची मो वॉइस क्लियर ठीक आछि त हाँ ठीक अछि। Ballad of Father Gilligan यार इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु डिस्कशन लिखुची आगे फास्ट ताको लेख तापर गोटोटी बुझेबा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो व्हाई वाज फादर गिलिगन वरीड नेक्स्ट क्वेश्चन why did he give forgiveness from God? Next question bring the meaning of he road now as he never rode. Why did the sick man's wife say, Father, you come again? Next question, what were his words of gratitude to God? Last question, what qualities of Father Gilligan do you admire? এই ছটি হচ্ছে বালাড অফ ফাদর গিলিগান চ্যাপ্টার র ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन আকু ফার্স্ট নোট कर दे मु गोटे गोटे की बुझे।
समस्त नोट कर देलो क्लियर देखा जाउनी एबे पिला मन ठीक ठाक देखा लगी पिला मन क्लियर विजिबल लगी हो ठीक अछि हो देखो देखी why was father Gilligan worry means he was tired काहे कि फादर गिलिगन टायर्ड हे जाइतले फादर गिलिगन वाज वरी बिकॉज हाफ ऑफ हिज पैरिशनर्स जो पेरिस जो सेठी जो गोटे महामारी व्यापी थला ताकर गोटे दल थांती बा फ्लॉक तक हुआ जाए ताकर कोन अधा दल को हितले रोग सर्जरी रे पड़ी की बेड रे पड़थिले रोग सर्जरी सहित है कि आ अधा कोन हितले समाधिस्थ हे जाइतले बुझि पाइलो ताले कोन लिखिबो फादर गिलिगन वाज वरी बिकॉज हाफ ऑफ हिज पैरिशनर्स आर देयर इन बेड्स or under the grave he has to attend them all तांको कोन करिया होतिला समस्त को अटेंड करिया होतिला he had to attend them all तेनु कोन हेतिला काहे कि फादर गिलिगन मरि हेतिले फादर मोर एबे डिस्कशन करछ मा नोट्स प्रोवाइड कर देबी आजी बेस्टोनी टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी किंतु एबे बुझो कि बुझो फास्ट है फादर गिलिगन वाज वरी बिकॉज़ half of his parishioners are there in beds or under grave he had to attend them all clear then asla why did he give forgiveness from God काहे कि गॉड को ठारू ए ईश्वर मते रक्षा कर काहे कि कहितले फॉरगिवनेस काहे मांगतले ही साउट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर स्टेटिंग दैट ही एन्जॉयड नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस फॉर अटेंडिंग द सिक हु डाई एंड डाई माने कहउछन लोक माने मरुछन तेनु ताको जीवन ना गोटे रेस्ट आराम अछि ना गोटे जॉय माने आनंद अछि ना गोटे पीस मींस शांति ना जीवन शांति अछि बुझि बेलडी he had spoken out these words of a physical exhaustion not because he did not want to work से काम करबा को चाहतले माने ताको बॉडी ए कथा कहउतला किंतु ताको आत्मा बा सोल जोटा से ए कथा कहउ नथिला कोन से चाहतले जाई कि लोक मानकर सेवा करिया पे जेहेतु ड्यू टू लॉट ऑफ प्रेशर बा फिजिकल प्रेशर से कहउतले ताको बॉडी कोन कहउतला बॉडी स्पोक बुझि बेले ताको बॉडी कहउतला जे से जाई कि सेवा कर परिबो नाही किंतु ताको आत्मा के भेले कहउ नथिला बुझिला तर नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रिंग द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ आज ही नेवर रोड माने या एक्सप्रेशन ना माने बुझाओ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ आज नेवर रोड मींस पीटर गिलिगन्स फास्टेस्ट राइड एवर माने कोन जो घोड़ा को से घोड़ा तांकर सोइतला से घोड़ा को माने कोन बोले ताको एमिति रॉकी लेन एंड फेन माने एमिति पथुरिया रास्ता रे ताको नेले आगुर केबे हेले से ताको एमिति नै नथिले काहा को घोड़ा को तांकर बहुत लिटिल केयर नेंदी किंतु जेहेतु से तांको मन रे गोटा आशंका आछि जे कोन हेछि सिगमेंट बोधे मरि जाइछि कि सेति पई से कोन गले रॉकी लेन फेन किछि न मानि कि घोड़ा को कोन गले फास्टेस्ट नेकी गले बुझिला तापर आसिला व्हाई डिड द सिगमेंट वाइफ से फादर यू कम अगेन से काहे के कथा कहिथिले फादर यू कम अगेन देखो द सिगमेंट वाइफ सेड फादर यू कम अगेन बिकॉज़ she had seen him come to her husband who died soon after he left the house माने से काहे के आश्चर्य गेले कारण से गत घंटाई हबो फादर गिलिगन आसिले ईश्वरଙ୍କ बाणी तांको स्वामी को निकट रे कहले आ तांको स्वामीଙ୍କର घंटे पूर्व मृत्यु होई जायछि किंतु आउ थेर पुनी फादर गिलिगन काहे के आछथि या भाबी कि से आश्चर्य हे गेले नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट वर हिज वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड माने तांकर कोन ईश्वरଙ୍କ प्रति धन्यवाद बा कृतज्ञता थिला कोन धन्यवाद बा कृतज्ञता अर्पण करथिले ईश्वरଙ୍କୁ हिज वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड वेयर he who take care of all things in the vast universe never forgot to relieve a poor priest like him in his need बुझिला माने अर्थ कोन he who took care of all things in the vast universe माने ये संसार रे एडा बडा यूनिवर्स ब्रह्मांड रे जे कोन करंती
छोटरू क्षुद्रतर जिनिस दया करती से कौन से ईश्वर भूली ना माने पीटर गिलिगन दरकार समय रे ईश्वर आसिक साहाय्य करछन्ती तेनु से व्हाट्सएप से ग्रेटिट्यूड प्रदान करथिले काहाकू ईश्वर को प्रदान करथिले तापर कोन व्हाट क्वालिटीज ऑफ फादर गिलिगन डू यू एडमायर को क्वालिटी तमे फादर गिलिगन को एडमायर करबो बा आदरेइबो को गुण को फर्स्ट हला इज ड्यूटीफुलनेस कर्तव्यनिष्ठा डीप कंसर्न फॉर द सिक माने असुस्थ लोक प्रति तांकर डीप कंसर्न रहितला आउ डिवोशन टू गॉड बुझिला तांकर ईश्वर प्रति भक्ति भाव तेणु ए छटा होची हमर बोर्ड परीक्षा पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए 2 मार्क के क्वेश्चन को भले से प्रैक्टिस करबो यार नोट्स मु तुमको प्रोवाइड कर देबी टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी कार कोन डाउट अछि कि ना नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करबा आगे जो एग्जाम अच्छी जोटा आग अच्छी एग्जाम इंग्लिश प्रति ध्यान दियो फिजिक्स केमिस्ट्री 6-7 दिन लेखे गैप अच्छी ता भीतर प्रैक्टिस करे सारिबा कि जोटा आग अच्छी ता ऊपर फोकस रखो ऑल सब्जेक्ट पे तमे ओरिड हो नहीं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करबा ओके ठीक अछि ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करछि देखो देखो देखी हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ फादर गिलिगन्स पैरिशनर्स ऑल वेयर हेल्दी एंड वेल हाफ वेयर इन देयर सिक बेड्स और ग्रेव मोस्ट वेयर अटेंडिंग चर्च रेगुलरली द पैरिश वाज एक्सपेंडिंग रैपिडली माने कोन पड़ले कोन ताकर कंडीशन दर्शौची अधा ताकर रोग सज्जरे पड़छन्ती अधा ग्रेव रे पड़छन्ती तला आंसर कोन हबो हाफ वेयर इन देयर सिक बेड्स और ग्रेव बुझिबले मु काहे तमर जो सैंपल पेपर डिस्कशन करिया चाहूतली सेटा कारण तुम ऑप्शन टा देखि कि जानि परिबो कोटा आंसर हबो जेतु टिके प्रॉब्लम हैला सेति पे मते पुनी बोर्ड रे बुझिया पड़ुछि बुझिला ड्यूरिंग व्हाट टाइम डिड पीटर गिलिगन एक्सपीरियंस वेयरनेस केतले से वेयरनेस माने टायर्डनेस अनुभव करले ओनली ड्यूरिंग द डे ओनली एट नाइट बोथ डे एंड नाइट ड्यूरिंग चर्च सर्विस बोथ डे एंड नाइट हबो काहेकि कारण दिन राति लोक माने महामारी व्यापी लोक माने मरुछन जे मरुछन बुझिला तापरे व्हाट वाज द पीटर गिलिगन डूइंग व्हाट वाज पीटर गिलिगन डूइंग व्हेन द पुअर मैन सेंट फॉर हिम माने जतले सिक मैन आसिला सेतले कोन करथले पीटर गिलिगन कोन करथले रीडिंग ए बुक नोडिंग ऑन हिज चेयर प्रिपेयरिंग फॉर ए सर्मन विजिटिंग अनदर पैरिशनर कोन करथले चेयर रे बसी झुलुथले बुझिबले जो आराम चौकी जोटा कोनती सेही नोडेड चेयर रे बसी कोन करथले निजे झुलुथले What is the significance of the moth hour in the context of the poem? Moth hour means kon? It signifies the end of the day. It represents a time for prayer. It is the hour when moths are the most active. It marks the beginning of night. माने kon? जतले moth माने बहुत active kan. Moth माने होची कीट. बुझि पले moth hour माने होची हमर दी प्रकार hour होची गोटे होची moth hour आउट होची dust hour. moth hour kon? जो समय होची कोन कहला कीट ओडिया समय माने जेतले हमर दिन सरी जाउतबो संध्या आस्तबो आ गोटे समय कोन संध्या सरी की राति कंप्लीट हे की भोर समय रे किते माने उडंती जेतले सकाळ आरंभ नथो आ गोटे कोन होई जेतले राति दिन सरी की संध्या बेला होतो सेही समय रे किते माने उडंती ताको मथ हबार कहै छै तबरे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव What was the time of the evening did he know of केतले dawn moth hour midnight noon कोन हबो moth hour तापरे What happened when he fell asleep on the chair? कौन घटिला? It started raining. The stars began to twinkle. The sun rose. It became completely dark. कौन हला? The stars began to twinkle. माने कौन तारा माने चमकिया पे आरंभ करले. कना राति ही होइतला. तापरे What does flock refer in the context of the poem? Flock अर्थ कौन? Flock अर्थ जनरली होची दल. A group of birds, the parishioners of the church, the priest's family, the children in the congregation. ताले कौन हबो? The parishioners of the church. तांको चर्च जो parishioners को इंडिकेट करी कि flock कहै छै. एठी दल पक्षी मानकर हबनी कि पशु मानकर हबनी. कोन चर्च जो parishioners अछि तांको दल को एठी कोन flock रेफर कराइ छै. What does the poem suggest about Father Gilligan's dedication to flock? कोन रहै छै? What does the poem suggest about Father Gilligan's dedication to the flock? कौन रही
he was indifferent to the needs, he has dedicated but physically exhausted, he only cared for a select few, he was looking for a way out of his duty. ताले कौन हबो? He was dedicated but physically exhausted. से बहुत dedicated थिले, dutifulness थिले, कर्तव्य परायण थिले, निज कर्तव्य प्रति कौन निज कर्तव्य को गुरुत्व दउथिले, किंतु physically exhausted माने physically शारीरिक बहुत अक्षम थिले, फिजिकली बहुत कौन हो जाइए मेंटली और फिजिकली कौन बहुत लॉट ऑफ प्रेशर जो से डिप्रेस्ड हो जाइए बा टायर्ड हो जाइए बुझिला ये थिला इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन पार्ट 1 रो आउ आर कौन अछि इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मुझे कह दोची हां व्हाट कॉस्ट पीटर गिलिगन टू वेक अप एट डॉन डॉन माने होची भोर समय को डॉन कहा जाए द साउंड ऑफ थंडर द चिपिंग ऑफ स्पैरोस एंड मॉथ a loud knock at the door church bell ringing माने कोन द चिपिंग ऑफ पैरोस ए जो स्पैरोस कोन घर चटियांकर किचिर मिचिर शब्द आ जो कीट मानक जोगु से कोन हले भोर उठी आइथिले the term mabron indicates father Gilligan's joy indifference concern anger कोन हबो हबो concern mabron mabron माने कोन कहलो हमरे जेंति कहू हाय रे लोकटा मरि गेला हम जेंति दुख प्रकाश करी कहू सेंति mabron वाटा दुख प्रकाश पय लागिछि Why did God create the night sky as per the poem? To guide travelers at night, to inspire poets and artists, to provide solace to the tired, to show his artistic skills. कौन हबो? हबो to provide solace to the tired. माने जो माने कौन? दिन सारा परिश्रम करी थकी जांती सेति पई तांको पई रात्रि रो विश्राम समय को ईश्वर गढिचंती What action of Peter Gilligan demonstrates his humility, his refusal to take credit of his work, his comparison of himself to minor things, his daily routine of helping others, his decision to live a life of poverty ताले कोन हबो his comparison of himself to minor things माने से कोन निजु को बहुत छोट जीव सहित तुलना करछनी very little thing बुझ पल्ला तो which is the expression father you come again suggest what kon habo the sick man was expecting father Gilligan someone niggling the father Gilligan visited the sick man father Gilligan had forgotten something the sick man was delirious kon habo answer habo someone niggling father Gilligan visited the sick man kon kale जने देखिला कोन देखिला जे फादर गिलिगन विजिटेड द सिक मैन माने फादर गिलिगन सिक मैन को देखिया को आछन माने की तांको वाइफ जहार कोन स्वामी मरि जाइथिले बुझिला तो ये थिला इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहार हमर फादर बालाडा फादर गिलिगन कार कोन डाउट जदी पचार नले नेक्स्ट चैप्टर को जिबा नेक्स्ट चैप्टर को पिलान जिबा की हां काली ग्रामर डिस्कशन करबा ग्रामर पाई मुख्य पांचोटी चैप्टर को फॉलो करो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तापर होची हमरो फेजल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोडल्स बुझि बेलटी ए सब चैप्टर को आउट होची हमरो एक्टिव पैसिव वॉइस बुझिला तो एक्टिव पैसिव वॉइस आ कंडीशनल सेंटेंस जो क्लॉज कंडीशनल अछि से चैप्टर को फॉलो करो आ रिपोर्ट राइटिंग पाई बेसी इंपोर्टेंट होची हमरो होची साइंस एग्जीबिशन ट्रिप ऑलरेडी मु 10 टा तमरो सिलेक्शन केबे टू रिपोर्टर दे दीची बुझिला तो हमरो रिपोर्ट वर्तमान सिलेक्शन होची कोन ट्रेन एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट साइंस एग्जीबिशन ट्री प्लांटेशन रोड सेफ्टी अवेयरनेस हेल्थ चेकअप कैंप इस कैंप ऊपर आई चेकअप हो ब्लड डोनेशन हो ए सब टाइप रो देखि दाओ आराम रे भल मार्क आसीबो ठीक अछि नेक्स्ट चैप्टर को जिबा
नेक्स्ट लिख साम ऑफ लाइफ साम ऑफ लाइफ रो फर्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट लाइफ लाइफ विषय कौन क्वेश्चन बा लाइफ इज अर्नेस्ट जो काई क्वेश्चन व्हाई लाइफ इज रियल एंड अर्नेस्ट दीटा को एक क्वेश्चन बुझ पाइलो लिखो व्हाई you dost next लिखो what does the poet tell us what does the poet tell us about the past and future about the past and future past और future विषय रे कौन क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन what does the poet tell us about the soul next what does the poet distinguish between art and time art and time next question what do the lives of great men remind us कौन रिमाइंड करछि ए छोटा होछि साम ऑफ लाइफ रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर दियो ठीक अच्छे स्टार्ट करवा व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट लाइफ लाइफ विषय रे पोएट कोन कहछन्ती बा व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इज रियल लाइफ इज अर्नेस्ट दीटा का सेम क्वेश्चन बुझि पेलडी सेटो खाली बुले की देछि नल दीटा का आंसर सेम हबो तले कोन कहैछि द पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल and its ultimate goal is not death
कवि मत लाइफ इज रियल जीवन हूँ वास्तव इट्स अल्टीमेट गोल इज नॉट डेथ माने जीवन अंत अल्टीमेट गोल मृत्यु नुहे बुझिपारे आमर जीवन गोल कौन मृत्यु नुहे लाइफ डज नॉट एंड इन द ग्रेव जीवन केवल समाधि रे शेष हेबो नाही बिकॉज द सोल इज नेवर एंडिंग इट कंटिन्यूज टू लिव ऑन आमर आत्मा के आत्मार केबे हेले मृत्यु नाही यह सब बेला पई जीवंत रहितबो सो वी शुड राइज एबव आवर सरो एंड प्लेजर आम तेणु कौन करिया राइज करिया पड़ो एबव आवर सरो मीन्स दुख आउ प्लेजर मीन्स आनंद दुख आउ आनंद ऊपर हमको राइज करिया पड़ो ताले मु कौन कहली व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट लाइफ लाइफ विषय कौन कहछंती द लाइफ इज रियल एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ बुझिपारे अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज नॉट डेथ लाइफ डज नॉट एंड इन ग्रेव लाइफ केवल ग्रेव रे एंड हबनी बिकॉज द सोल इज नेवर एंडिंग आत्मार केवल मृत्यु नहीं इट कंटिन्यूज टू लिव ऑन या कंटिन्यूअसली रहिबो सब बेला पई जीवंत रहिबो सो वी शुड राइज अबव द सरो एंड प्लेजर हमको दुख बा विषाद एवं आनंदर ऊपर राइज करिवार अछि बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डस्ट दो आर्ट टू डू डस्ट दो रिटर्नस माने एटा होची बाइबल रो पद कार पद बाइबल रो पद कोन कहै छै आ विषय रे just do art to dust do returns is a quotation from the bible that tells about कहा विषय कहिछि the mortality of human body mortality माने होछि मरणशीलता man is always mortal मनुष्य सबले मरणशील ताले कहा विषय लाइनटा कहिछि mortality of human body very very important objective mortality of human body it only says that human body is composed of dust माने धूली रे तैयारी हेची ह्यूमन रो शरीर मनुष्य शरीर धूली रे तैयारी हेची एंड इन द एंड विल रिटर्न टू डस्ट आ एंड रे मध्ये ये कोन हिजिवो माटी रे मिसि जिवो तले बुझियाला डस्ट दो आर्ट दो डस्ट दो रिटर्नस रो अर्थ होची हमर कोन हेची इट इज ए कोटेशन फ्रॉम द बाइबल दैट टेल्स अस अबाउट द मोर्टालिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी रो मोर्टालिटी विषय रे कहैछि इट ओनली सेज दैट कोन ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डस्ट ह्यूमन बॉडी कोते तैयारी डस्ट रे तैयारी and in the end it will return to dust ए कहबो एंड रे भी डस्ट रिटर्न हे जिवो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट द पास्ट एंड फ्यूचर विषय रे कोन कवि कहिसंती द पोएट एडवाइसेस अस नॉट टू माउन ओवर पास्ट और कीप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर माने नॉट टू माउन ओवर पास्ट माने अतीत को नै दुख कर नाही और कीप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर भविष्य को नै चिंता कर नाही ताले कोन कहले द पोएट एडवाइसेस अस कोन एडवाइस करचंदी not to mourn over the past अतीत को नहीं दुख कर नहीं और keep thinking about future भविष्य को नहीं चिंता कर नहीं he tells the readers कौन रीडर्स को कहछन टू लिव इन द प्रेजेंट वर्तमान सहित बंचिया पे कहछन्ती केमिति वर्तमान सहित बंचिया पे कहछन्ती he says that future is unseen भविष्य तो के देखि नांती and no one can guarantee it यार कोई गारंटी मधु नहीं परिबेनी and the past is dead अतीत सबले मृत so it should be buried as it cannot be changed हमें अतीत को कौन करिबा चेंज कर परिबा नहीं so we should act as well as to achieve the ultimate goal of life that is to unite with the almighty माने ईश्वरन को ऊपर विश्वास रखी हम कोन हमको जो बड़ी भाबरे अभिनय करिबा के संसार मर्त्यभूमि के रखा आइछि हमको सेही बड़ी भाबरे अभिनय करिया को पड़िबो भविष्यत कथा चिंता करिबा नहीं किबा अतीत को नै दुख करिबा नहीं कारण कौन कहले फ्यूचर इज अनसीन भविष्य तो के देखि नांदी सो इट नो कैन गारंटी इट नो वन कैन गारंटी इट के यार गारंटी नहीं परबेनी एंड द पास्ट इज डेड सो इट कैन बी बरीड पास्ट होची ऑलरेडी डेड बुझिला व्हाट डज द पोएट टेल अस अबाउट सॉल विषय रे कोन कहछन्ते कोच which according to the poet human life cannot go on forever मनुष्य जीवन केवल सबल पई रहि परिबो नै कारण आज मनुष्य अछि काली के हेत न थाई पारे मनुष्यर मृत्यु निश्चित मैन इज मोर्टल तेनु कोन कहै छी एंड मस्ट कम टू एन एंड तेनु हमें जेमितेला हम जीवन चली जीवो निश्चित दिने ना दिने हमें तो मृत्यु वरण करिए होबो इट इज द मोर्टालिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी मैं जोटा कहली मैन इज ऑलवेज मोर्टल बट द इमोर्टल सोल डज नॉट रिटर्न टू डस्ट और डेथ किंतु इमोर्टल कोन साउल बा सोल हम जोटा कहूचे आत्मा होची अमरणशील इट डज नॉट रिटर्न टू डस्ट या धूली रे मिसिबनी और ग्रेव माने समाधिस्थ हेबो नै ताले कोन कहला मैन इज ऑलवेज मोर्टल ह्यूमन बॉडी को बा आज अछि कैन नॉट गो ऑन फॉरएवर इट मस्ट कम टू एन एंड जेमितेले एंड आसीबो बट इट द मोर्टालिटी इट इज द मोर्टालिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी एटा होची ह्यूमन बॉडी रो मोर्टालिटी किंतु इमोर्टल सोल अमरशील आत्मा डज नॉट रिटर्न टू डस्ट द ग्रेव
तापर कौन देछि व्हाट डज द पोएट डिस्टिंग्विश बिटवीन द आर्ट एंड लाइफ ताले केमे डिस्टिंग्विश करछन्ते द पोएट सेज दैट द आर्ट इज लॉन्ग लास्टिंग आर्ट कोन कला सबले लॉन्ग लास्टिंग एंड द टाइम इज फ्लिटिंग बाय नेचर समय कोन है प्रकृति अनुसार परिवर्तन होता है इट टेक्स टाइम टू लर्न द आर्ट ऑफ लिविंग तो आम कोन बंचिबार कोन आर्ट ऑफ लिविंग माने बंचिबार कला को कोन करियार अछि सिखिबार अछि एंड वन शुड बेस्ट यूज द टाइम व्हिच क्विकली पासेस ऑन समय जो चली जाउची तार बेस्ट यूज करियार अछि ताले कोन कहला पोएट केमिति डिस्टिंग्विश करछि आर्ट ऑफ टाइम भितरे आर्ट होची लॉन्ग लास्टिंग द पोएट सेज दैट आर्ट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड द टाइम इज फ्लिटिंग बाय नेचर टाइम कोन हिते परिवर्तन होता है प्रकृति अनुसार इट टेक्स टाइम टू लर्न आर्ट ऑफ लिविंग तेणु आम केमी आमको आर्ट करा पड़ो आर्ट ऑफ लिविंग केमी आमको कौन शिक्षा हम आर्ट ऑफ लिविंग केमी बंचिबा तार कला शिखबार अच्छी एंड वन शुड बेस्ट यूज ऑफ टाइम व्हिच क्विकली पासेस ऑन आ जो समय गड़ी चली क्विकली जो समय चली जाउची ताको कौन करिया हबो तार बेस्ट यूज करिया हबो बुझिला लास्ट क्वेश्चन कोन व्हाट डू द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड अस लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन रिमाइंड कोन करछंदी लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन कोन रिमाइंड करछंदी माने महापुरुषंकर जीवन हम कोन ताकर मतामत महत्व हम कोन रिमाइंड करछि द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन माने महापुरुषंकर जीवन रिमाइंड अस कोन माने पकई दोछि दैट वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड नोबेल by emulating the example set by them माने से माने जो उदाहरण छाड़ी देइचंती ता द्वारा हम जीवन को ही परिबो महान और महत ही परिबो सिमिलरली बाय आवर एक्शंस हमर कार्यकलाप एंड नोबेल डीड्स माने उत्तम कार्य द्वारा वी कैन लीव एग्जांपल्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन आमे कोन आमे मध्ये एग्जांपल उदाहरण छाड़ी परिबा का में फ्यूचर जनरेशन पाई ताले ग्रेट मैन कोन इमेज करछंती वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम एंड नोबेल by emulating the example set by them से माने जो उदाहरण छाड़ी जाइछंती ताकू आमे यूज करके कोन हम जीवन को कोन करबा महत बा महान कर परिबा सिमिलरली बाय आवर एक्शन हमर कार्यकलाप एंड नोबेल डीड्स माने उत्तम कार्य द्वारा वी लीव एग्जांपल्स फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन आमे हम फ्यूचर जनरेशन पे कोन एग्जांपल छाड़ी परिबा बुझिला तेनो कार कोन डाउट जति पछारो कार कोन डाउट अछि की पिला माने जो लिखुछ 2 मार्क पे पैसेज आसीबो कि नै एटा काली तमे निजे एग्जाम देले जानि परिबो आसीबो कि नै कारण एपर्यंत गवर्नमेंट रु बा हमर काउंसिल बोर्ड रु एपर्यंत किछि सेमति स्पेसिफिक आसीनी किछि सैंपल पेपर रे 2 मार्क पे पैसेज दोछि किछि सैंपल पेपर रे 2 मार्क पे पैसेज दोनी 1 मार्क पे पैसेज दोछि तनो कोन गवर्नमेंट हमर बा कोन काउंसिल बोर्ड काली एग्जाम रे आसीबो सेटा केही कहि पर नांती को टीचर सठी भाबे कहि पर नांती किंतु मते जति लागुछि पैसेज एथर को आसीबो नै तनो तुमको भलसे वेल प्रिपेयर हेकि जिया को पड़िबो रिपोर्ट राइटिंग इंपोर्टेंट रिपोर्ट राइटिंग कहलिबा 10 टा इंपोर्टेंट म ऑलरेडी दे देछि तमे जाय कि चैनल ले देख परिबो मु कहि दोछि बेसी इंपोर्टेंट होछि ट्रेन एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट ब्लड डोनेशन साइंस एग्जीबिशन आउ ट्री प्लांटेशन रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम आई चेकअप कैंप हेल्थ चेकअप कैंप आ बुक फेयर जो अछि 10 टा दे देछि तमे जाय कि चैनल ले देख परिबो जो माने 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो एतुरु जेकोनोसी ऑब्जेक्टिव पढू तमे 6 टा क्वेश्चन जे भल से प्रिपेयर हेथो तार ऑब्जेक्टिव आराम रे कर परिवो तेनो मु नेक्स्ट चैप्टर को जिबी हमर कोन टेलीविजन यार कोन बुझिबार अछि की ना नेक्स्ट चैप्टर को जिबा प्लान नेक्स्ट चैप्टर को जिबा की
हाँ ठीक अच्छे। नेक्स्ट चैप्टर आसला टेलीविजन। टेलीविजन माने कौन? टीवी। वर्तमान जदि टेलीविजन सेतर अथर्क समय रे सेतल टेलीविजन थिला बेलिया से टेलीविजन ऊपर पोएम लिखिले किंतु वर्तमान जुग रे टेलीविजन बदले स्मार्टफोन लिखिया कथा स्मार्टफोन ऊपर पोएम बाहर करिया कथा किंतु सेतले कोन थिला अथर्क समय नथिला स्मार्टफोन सेति में टेलीविजन ऊपर बाहर कर देले जदि अथर एबेकार हेतांदे ताले जेमिते स्मार्टफोन बाहर करथांदे। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द what does advise the parents regarding television? Next question, how do children behave? Children behave while gapping at the screen. Next question, what has the poet watched? कौन देखंती in every house? The poet say about what is shown on TV. What is the most important thing? What is the most important thing we have learned? Last question, why do parents let their children watch TV? नोट कर दिया पिला माने। पांच मार्क को क्वेश्चन डिस्कशन करिया पे कहते 5 मार्क तो सेमती किछि क्वेश्चन आसीबनी हमर 2 मार्क 1 मार्क आसीबो प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल रु प्लान नोट कर दियो। ठीक अच्छे मु डिस्कशन स्टार्ट करछि। डी मार्क कवर हो गेले एमसीक्यू तुम आराम रे कर परियो बुझि पैलो देछि
What does the poets advise to the parents regarding television? कौन advice देइछन्ती? The poet advises the parents not to let their children sit near the television set for hours. हम जो पिला मान जो घंटा घंटा धरि टीवी आगे बसचन्ती तेनु कोन पोएट एडवाइस करचन्ती तांकू घंटा घंटा टीवी आगे न बसया पई वर्तमान से टीवी जगह एबे खाली मोबाइल लागियो मोबाइल माने स्मार्टफोन लागियो कारण पिला के टीवी देखुना सेति पय आ टीवी बिक्री होनी बेसी बिका होछ कोन स्मार्टफोन छोट ठारू आरंभ करी बड़ पर्यंत समस्त हाथ कौन स्मार्टफोन तेणु टेलीविजन बदले कौन लगे कथा स्मार्टफोन लगे कथा he says it's even better not to install a television set at all तेणु पोएट आउ कौन एडवाइस करछन्ती कोनोसी टीवी सेट को इंस्टॉल न करिया पई कोनोसी टीवी सेट को इंस्टॉल न करिया पई ताल प्रथम कोन कहले पिल्ला को घंटा घंटा धरि टीवी आगे न बसिया पई आउ टीवी सेट को नॉट इंस्टॉल करिया पई बुझि बेले टोटल टीवी बाउंस थिले सिना बइस बाजिवो टीवी थिले सिना पिला देखिबे इंस्टॉल टोटल टीवी करबोनी पिला देखिबे केमती बुझि पाइला नेक्स्ट कोन दिछि हाउ डू चिल्ड्रन बिहेव व्हाइल गैपिंग एट द स्क्रीन दिछि व्हाइल वाचिंग टीवी चिल्ड्रन सिट और lie around the TV in a lazy position eating and spilling snacks माने कोन व्हाइल वाचिंग टीवी जेतल टीवी देखथि पिला माने चिल्ड्रन सिट और lie around the TV सिट माने बसिबा lie माने पड़ी रहबा lie around the TV in a lazy position माने अलसुआ पोजीशन ने पड़ी रहंती eating and spilling snacks माने स्नैक्स जो प्राय तो समस्त कोन खाइबा समय टीवी देखंती खांती आडे बिंचती बुझि पेलटी जलखिया खाइबा समय तले कोन कहला स्नैक्स while watching TV children sit or lie around the TV in a lazy position को पोजीशन ने lazy position ने eating and spilling snacks ଗୋଟେ important objective मोर मन पड़े चैप्टर आसे मोस्ट इडियोटिक थिंग कहा कहै छै टेलीविजन को सब इडियोटिक थिंग कहै छै मन रखियो नेक्स्ट है what has the poet watched in every house which he has seen it in every house that the children sit long hours before television sets gapping at the screen and wasting a lot of their time माने कोन करंती समस्त घरे पोएट कोन नोटिस करछंती पिल्ला माने टीवी आगरे बहुत लॉन्ग आवर धरि की बसछंती आ सेतरो गैप दोनांती स्क्रीन भितरे गैप टोटल दोनांती माने कंटीन्यूअसली टीवी देखुछंती and wasting a lot of their time माने बहुमूल्य समय तांकर बहुत नष्ट करछंती they watched it until their eyes hurt माने जे पर्यंत तांका आखि के कष्ट न होईची से पर्यंत पिला माने टीवी देखुछंती एटा कोन पोएट नोटिस करछंती समस्तंग घरे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट से अबाउट व्हाट इज shown on TV the poet is of the view that what is shown on the TV is absolutely junk and useless and sometimes shocking too बुझि पेलो कोन दिछि द पोएट इज ऑफ द व्यू कोन देखछन्ती टीवी रे कोन आछि एब्सोल्युटली जंक यूजलेस माने जहार कोनोसी मीनिंग नाही बुझि पेलो जोटा कोनोसी आवश्यक रे लागेबनी और समटाइम्स शॉकिंग टू बेले बेले आश्चर्य से टीवी रे दोछि बुझि पेलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग वी हैव लर्न सबटा कोन इंपोर्टेंट थिंग हमें सिखिले बुझि पेलो कोन इंपोर्टेंट थिंग हमें सिखिले ए पोएट रू कौन सिखिले द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट वी हैव लर्न इज दैट चिल्ड्रन शुड नेवर बी अलाउड नियर द टीवी सेट पिला मानन को केबे हेले टीवी सेट पाखरे अलाउ करिबा कथा नुहे तापर कोन व्हाई डू पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वॉच टीवी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला मानन को काहे की छाडुछन्ती पेरेंट्स टीवी देखिया पाई पेरेंट्स लेट देयर चिल्ड्रन वॉच टीवी so that they keep still they do not climb out the window sill प्रथम कारण they do not climb out the window sill बेले बेले पिले माने कोन होंती झरोका आ जो मानक छात नंडा छात थाए से माने कोन करंती तापर चली जानती और तळगु गळी पडंती बुझि बेले असावधानता जो से माने मृत्यु होई जे बेले बेले तेनो कोन they do not climb out the window sill ऊपर माने झरोका या पर चढ़ीबे नहीं they do not fight or kick माने परस्पर सहित जार भाई बोल थानी कोन हरबे झगड़ा करथिबे झगड़ा न लगिया पे से माने भितरे they leave them free to cook the lunch तांगा मां मानन कोन लंच करिया रे डिस्टर्ब न करिया पे तांको टीवी देखियो छाड़ दियो दिया कोन wash the dishes in the sink माने बासन मजा मजी करिया रे डिस्टर्ब करथिले पिला मानन को माने टोटल ऊपर कहिया गेले तांको व्यस्तता भीतर न रखिया पे पेरेंट्स मानन को पिला मानन को से माने टीवी पाकर छाड़ दियो एबे मोबाइल पाकर छाड़ दोछन बुझियला ये थिला हमर कोन टेलीविजन नो इंपोर्टेंट क्वेश्चन कार कोन डाउट जदी पचारो तापरे लास्ट चैप्टर हम डिस्कशन करबा मनी मैडनेस
कौन डाउट अच्छी पचार नेक्स्ट चैप्टर को जीवा दी मार्क पे अरे पिले देख दी मार्क पे एथरा पैसेज आसीबो कि नहीं केही कंफर्म भी कहि पर नांदी कारण काउंसिल सेमति किछि स्पेसिफाई करनी किंतु मो हिसाब रे मते लागु जे एथरा पैसेज आसीबो नहीं तुम क्वेश्चन आंसर मन रखि जे लिखियो पड़िबो जदि आसिला तो बहुत भलो कथा केही सियोरली कहि पर नांदी हो ठीक अछि नेक्स्ट चैप्टर को जीवा मनी मैनेज मनी मैनेज पैसार पागलामी देखो how does a person feel how does a person feel when he parts with a pound of money Next question. What do people say about man's worth?
Next question, you think bread, shelter, comma, and fire should be free? Explain you think so. Explain why you think so. ये चैप्टर टा पिला टिके डिफिकल्ट अछि, तुम जो चाहिबो याकू तुम स्किप करिकि बाकी चैप्टर तीनटा को भल से प्रैक्टिस कर परिबो। आउडे चारटा क्वेश्चन पढो बोल से, व्हाई डज द पोएट से we must have some money? नोट कर दियो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन लेची, हाउ डज ए पर्सन फील व्हेन ही पार्ट्स विथ ए पाउंड ऑफ मनी? ए पर्सन सफर्स ए शार्प सडन फीलिंग ऑफ पेन माने कष्ट, व्हेन ही पार्ट्स विथ ए पाउंड ऑफ मनी। कौन कहला, ए पर्सन सफर्स फ्रॉम ए शार्प सडन फीलिंग ऑफ पेन माने हठात कष्ट जंत्रणा, बुझि गेलटी, व्हेन ही पार्ट्स विथ ए पाउंड ऑफ मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल से अबाउट मैन्स वर्थ? कौन देची, people say how much money a man possess? गोटे लोक केते पोजेस कर परची मनी माने केते टंका पोजेस कर परची से लोक माने कोन कोन मैन्स वर्थ विषय रे, बुझि बेले। सो सिंपल आंसर अछि, केतेटा और केतेटा डिफिकल्ट आंसर भी अछि। डू यू थिंक ब्रेड, शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री? यस। कोन होबा आंसर आरो? यस, आई थिंक ब्रेड, शेल्टर एंड फायर शुड बी फ्री बिकॉज़ these are the most basic necessities of life. हम जीवन पे एरा होची नेसेसरी आवश्यकता रहिची। These three things are essential for everyone. समस्त में ये होची अत्यावश्यक, irrespective of rich or poor, गरीब हो कि धनी हो, and should be easily available to all. समस्त को easily available है परिबो, बुझि पेलटी। Next question, why does the poet say we must have some money? The poet says that we must have some money to save us from living in a state depending on misery. In other words, with some money at our disposal, we have to right to live in a dignified way. हमर कोन एठी राइट रो मीनिंग होबो कोन, अधिकार होबो कोन होबो। In other words, with some money of at our disposal, we have the right to live in a dignified way. बुझला, ये थिला हमर कोन चारोटी मनी मैनेज रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एबे हमें डिस्कशन करबा केमिति हमें इंग्लिश एग्जाम पे भलो से प्रिपेयर हेबा, बुझि बेलो, को स्टेप फॉलो करिवो, केमिति कोन आंसर करिवो, मु से विषय रे किछि डिस्कशन कर दोची, भलो से मन ध्यान दे सुनो। सुनो, प्रथम कथा हमर एथक प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल रे हमर पैसेज आसीबो कि नाही हमें से संपर्क रे कंफर्म नाही। तेणु आम कौन कर फास्ट तुम चैप्टर सब जाक क्वेश्चन पढ़ीदेव, क्वेश्चन आंसर मुझे इंपोर्टेंस बाछी बाछी इंपोर्टेंस क्वेश्चन पढ़, प्रीवियस जहाँ पढ़ी इंपोर्टेंस क्वेश्चन पढ़, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िले तुम से ऑब्जेक्टिव क्लियर हो पार, बुझिपाल। ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गला तापर जो 1 मार्क 3टा पड़े वन लाइन आंसर ताको भी क्लियर हो गला, तापर 2 मार्क कंप्लीट होला। कारण 2 मार्क रे हमर 2टा ऑप्शनल रहउची, कारण 4टा देछि तुम जे कोनसी 2टा करबो, बुझिपाल टी, सेटा तुम पे सुविधा होला। तापर ये गला क्वेश्चन आंसर पार्ट गला। आउ ग्रामर पे मु 5टा चैप्टर कहली भल से पढ़िबो, कंडीशनल क्लॉज, फेजल वर्ब, डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच, तापर हमर कोन कहली आ होची हमर मॉडल्स, तापर होची सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ए 5टा चैप्टर को ग्रामर पे भल से कैच करो, तैयारी करो को। ए 5टा चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट, मु ग्रामर भी खाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन केतरा करैबी, बुझिला। तापर होची नेक्स्ट हमर कोन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क थिला ताको हमर 5 मार्क कर देछि, तेनो फॉर्मेट पे 1.5 मार्क, कंटेंट पे 3.5 मार्क। फॉर्मेट रेडी हो गला, मु तुमको इंपोर्टेंट दे देछि कोन हमर ग्रामर। सतरे डर लागुछि कोन करबे आपण साहा देबे तो ग्रामर।
हाँ ग्रामर ग्रामर देखो ग्रामर जो हमरा आगुर पैराग्राफ आसुला से बहुत डिफिकल्ट आसुला कारण तमे माने ताको पढ़ी के एरर बाछिया बहुत कष्ट जेतु तुम पाखे तर बहुत ऑप्शनल पळे आसी बहुत ऑप्शन वाला चारटा ऑप्शन पळे आसला तमे इजीली सेतु जानि परबो कोटा ठीक होबो कोटा भूल होबो बुझि पेलटी आ गोटे कथा कहूची पिला देखियो जोठी ग्रामर तमे धर ट्रिक जानि पारनो एठी कोन यूज हेछि केमिते ग्रामर ता तमे करिवो एटा जानि पारनो तल देखिबो सबुठ शेष उपाय कहूची सबुठ एटा ट्रिक टा अप्लाई करबनी जोठी धर ग्रामर मने न पड़ची जानि पारनो एठी को ट्रिक अप्लाई हेछि ताको फास्ट सब जो चारटा ऑप्शन देइतबो से ब्लैंक रे से चारटा फास्ट गोटे ऑप्शन को बसेबो तापर आ गोटे ऑप्शन को बसेबो कोटा पार्टी को भलो से कोटा कान को मधुर सुबुची बुझि पेलटी बेले बेले ए ट्रिक टा काम दिए जदि कोड तमे ग्रामर न पारिबो ताले कोन करिवो ए जो चारोटी ऑप्शन देइथिबो ताको भलसे से जगह रे बसे की फिल इन द ब्लैंक्स रे बसे की सुनिबो जो वाटा सुइटेबल लागियो बेले बेले सेटा भी आंसर हो जाए बुझि पेलो रिपोर्ट राइटिंग कथा गला रिपोर्ट राइटिंग मु तुम दे देजी एक्सीडेंट ऊपर देखिबो कैंप ऊपर देखिबो साइंस एग्जीबिशन ट्री प्लांटेशन ऊपर देखो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम देखो एती देखो आर भीतर मते लागु छ आसी बोले हमर कोन रिपोर्ट राइटिंग ता बुझिला देन आसले हमर कोन नोट मेकिंग समराइजिंग नोट मेकिंग होची बहुत कष्ट न बहुत सहज कोन तुम फास्ट कोन करिवो गोटे सेत्रु गोटे टाइटल दे बाछिबो दैट इज हेडिंग ता अंडर कोन कोन सब हेडिंग आछि तार गोटे टाइटल बाछिबो माने टाइटल नो फास्ट देला टाइटल बा हेडिंग सेटा को जाय ता अंडर गला सब हेडिंग अंडर जीवो सब हेडिंग बा सब बेले सब हेडिंग थिबो बोलिया कोनोसी सेमति माने नाही बुझि पाइलो सुनो एमसीक्यू पई तुमको चैप्टर स्किप करिया पड़े मु कोन कहली 2 मार्क क्वेश्चन पे तुम गोटे चैप्टर स्किप करले चलिबो किंतु एमसीक्यू पई तुमको सब चैप्टर पढिया को पड़िबो 2 मार्क पई जे कोनोसी गोटे चैप्टर स्किप कर दे बाकी सब भल से पढा ही जीवो आ जदि कार कोन डाउट अछि बुझियार अछि को डिक्शनरी स्किल देखो आगे जो पांचटा देथिबो सबले मैच करके लिखियो तमर धर जोटा आगो हे जाउछ बुझि पेलडी जोटा माने नै जे तुम सिस्टमैटिक पांचटा रो पांचटा लिखो आगो रफ रे कोन करबो डिक्शनरी स्किल टाकू ओ मीनिंग से को सेंटेंस टा मैच करछि सेटा का आगे ध्यान दबो देखिबो जदी धर ऑप्शन सी रो मीनिंग ता आगे मैच कर गेला आई संगे तले सी ता आगे रफ रे लिखि दो जोटा अलग हे गेला ताको बाछि देला परे जोटा बळिबो लास्ट सेटा आंसर हे जिवो बुझि पाछना बुझि पारना आउ कार कोन डाउट अछि कि पचारो ठीक अछि आउ जहार जा डाउट थिबो काली हमें कोन करबा ग्रामर डिस्कशन करबा आउ जहार जा डाउट थिबो मु डाउट क्लियर कर देबी तेनो आज जति की प्रैक्टिस पई देली तक भल से प्रैक्टिस करो जदि कार कोन डाउट थिबो कमेंट माध्यम रे जणैबो आशा करछि आज रो लाइव क्लास टी समस्त भल लागिथिबो थैंक यू ऑल फॉर joining this live class and best of luck for your English upcoming English examination. Thank you.